Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. We were studying about arithmetic progressions. We have learnt how to find what is the standard form of an AP and how to find any term of an AP whether from the beginning of the AP or its end. Now in this session, we'll talk about finding the sum of the terms of an AP. So I hope you'll have fun learning. Let's get started without any further ado. So we saw how to find the nth term. Now do you know that if we are given the nth term, we can find the common difference or the equation for common difference using the formula d is equal to an minus 1 यानी कि succeeding term minus preceding term. I'll soon tell you how this is done. But before that, keep in mind that if an is equal to 2n square plus 1 or an is equal to 5n square or anything similar, these are quadratic expressions and will not give an AP. So an कभी भी ऐसी इक्वेशन नहीं बनाएगा जिसमें n की कुछ पावर हो. n की पावर हमेशा 1 रहेगी. Also, a sequence is not an AP if its nth term is not a linear expression in n. So एक AP के nth term की equation must be a linear equation always. For example, if an is equal to 4n plus 5 or an is equal to 3n minus 2 or anything similar to this, the sequence will be an AP. Now we have got a problem to solve here. It says that the nth term of an AP cannot be n square plus 1. Justify your answer. So how do we do this? Here an is equal to n square plus 1 we are given. तो हम n की जगह वैल्यू रख के देखते हैं. जब a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की जगह 1 रखने पे 2 मिलेगा. a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, n की जगह 2 रखने पे 5 मिलेगा. a3 की वैल्यू सिमिलरली n की जगह 3 रखने पे 10 मिलेगी. अब हम यहाँ पर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके देखते हैं. सो 10 माइनस 5 हमें देगा 5 एंड 5 माइनस 2 हमें देगा 3. अब 5 एंड 3 आर नॉट इक्वल. ऑल्सो वी हैव गॉट अनदर इंटरेस्टिंग अप्रोच. वी नो दैट AP में d is equal to an minus an minus 1. So here an is equal to n square plus 1 and an minus 1 is equal to n की जगह n minus 1 रख देंगे. So n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. अब हम जब d निकालेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, सो हमें d मिलेगा 2n माइनस 1. सो वी कैन सी दैट d के एक्सप्रेशन में n आ रहा है विच इज़ अ वेरिएबल which is making d also a variable. But we know that d has to be constant for a sequence to be an AP. That is why nth term of an AP cannot be n square plus 1. Here we made use of the formula d is equal to an minus 1. So you have seen arithmetic progressions, its common difference, the first term, the nth term, etc. In short, you know how to work with all of that. So now we will be talking about finding the sum of an AP or the sum of the terms of an AP. As we know, the general form of an AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to a plus n minus 1d. So the sum will be a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d up to plus a plus n minus 1d. इन टर्म्स की जगह an is equal to a plus n minus 1d वाला फॉर्मूला रख के एंड सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा एक फॉर्मूला जो कि होगा n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1d, which is the formula I was talking about for finding the sum of the first n terms of an AP. हमारा फॉर्मूला है s is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. Now if we observe closely, we can see that n by 2 into 2a plus n minus 1d is equal to n by 2 into a plus n minus 1d. हमने 2a को ब्रेक करके a plus a लिख दिया. अब इसको और सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा n by 2 into a plus an. हमने a plus n minus 1d वाली टर्म को an लिख दिया. अब अगर n है यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म तो हम an को l लिख सकते हैं. सो n by 2 into a plus l. So this is the total sum of the terms of the AP. I hope both the formulae are clear to you. S is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d and n by 2 into a plus l. ये दो फॉर्मूले हमने सीखे. So as you can see, the second formula is very useful when the first and the last terms of an AP are given and the common difference is not given.
Now remember I told you that common difference can be calculated using the an and an minus 1 terms. So d is equal to an minus 1. यहाँ पर n और n minus 1 हमारे सबस्क्रिप्ट में है. In a similar way we can calculate any term or an with the help of the sum of first n terms and first n minus 1 terms of an AP. So the formula is very simple. an is equal to sn minus sn minus 1, यानी हमने n टर्म्स के सम में से n minus 1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया तो हमें an की वैल्यू मिल गई. So I believe we have learnt all the formula needed to solve problems based on AP at our level. Now we are ready to proceed towards solving problems. So our problem is, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, then 1 centimeter, then 1.5 centimeter, then 2 centimeter and so on. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हम देख सकते हैं A और B दो सेंटर्स हैं. सो A सेंटर वाले सेमी सर्कल्स लाइन के ऊपर हैं एंड B सेंटर्ड सेमी सर्कल्स लाइन के नीचे हैं. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल सम ऑफ 13 such semicircles making up the spiral. So let us see how. So as we know that the perimeter or length of the boundary of a circle is equal to 2 pi r. So semicircle का perimeter कितना होगा? Obviously half of this, that is pi r. And the radii are given to us 0.5, 1, 1.5, 2 and so on. So हमारे पहले semicircle जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसका perimeter हो जाएगा pi by 2. ऐसे ही सेकेंड semicircle जिसका रेडियस हमें गिवन है 1, इसका perimeter हो जाएगा pi. ऐसे ही थर्ड सेमी सर्कल विथ रेडियस 1.5 का पेरीमीटर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 एंड फोर्थ सेमी सर्कल का 2 पाई. सो हियर वी आर गेटिंग एन AP दैट इज पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन. नाउ वी आर गिवन n इज इक्वल टू 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं AP के 13 और हमें निकालना है S13 यानी 13 टर्म्स का सम निकालना है हमें. सो यूजिंग द फॉर्मूला वी सॉ S इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d. n की जगह 13 पुट करने पे एंड d की जगह पाई बाई 2 पुट करने पे हमें मिलेगा 143 सेंटीमीटर्स. सो 13 सेमी सर्कल्स का सम मिला के हमें मिल रहा है 143 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द लास्ट सेमी सर्कल विल बी द लास्ट टर्म ऑफ आर AP. जैसा कि हमने देखा था हर टर्म एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आखिरी वाले सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म भी लास्ट होगा. To find it, we will use the formula for the sum that we saw. Sn is equal to n by 2 into a plus l. So sum हमें मिल चुका है 143. n की जगह हम लिख देंगे 13. So 13 by 2 into a की जगह pi by 2. So pi by 2 plus l. l हमें नहीं पता, l हमें फाइंड करना है. अब इसे सॉल्व करने पे हमें l मिल जाएगा 18.85 सेंटीमीटर्स. So this is how you can use these formulae to calculate the missing terms. So this is it. I hope that AP and its related concepts are clear to you now. We learned really interesting things in this lecture like a sequence is not an AP if its nth term is not a linear expression in n. Also common difference D is equal to an minus 1 यानी कि succeeding term में से preceding term minus करने पे common difference मिलता है. हमने AP के sum के दो formulae पढ़े n by 2 into 2a plus n minus 1 d and n by 2 into a plus l, and also at last an is equal to sn minus 1 यानी sum of n terms में से sum of n minus 1 terms को minus किया तो हमें an मिलता है. So I hope you had fun learning. For any queries information you may visit the link following the video. Thank you.